Hello students, I hope you are enjoying this level lockdown and of course you are utilizing your time as I advised you earlier also. Be in touch, पढ़ते रहिए नहीं तो we will be in trouble because we are running short of time. 10th class है. सेकेंड टॉपिक लेते हैं बेटा, सीधा आता हूँ टॉपिक पे. आज हम करते हैं बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक बहुत ही इजी टॉपिक है. सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का. अगर अपन डिस्कस करें करिकुलम में भी ये सेकंड टॉपिक है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. दैट्स व्हाई आई वांट टू कंक्लूड दिस टॉपिक, स्टार्ट एंड कंक्लूड दिस टॉपिक इन द सेम वीडियो. राइट, आप कोशिश करिए. बहुत इजी टॉपिक है, फोर्थ फिफ्थ के बच्चे भी इस टॉपिक को जानते हैं, लेकिन हाँ अब हम थोड़ा सा टेक्निकली इसको पढ़ रहे हैं. हम में से शायद किसी ने भी शायद पहले भी सुना नहीं हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नाम, लेकिन हम सब ने सुना हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इट इज नॉट टेक्निकल नेम ऑफ दैट. राइट, चलिए इसके आई होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज. पेन पेपर्स है ना आपके पास में? चलिए शुरू हो जाएं. थोड़ा सा पेन पेपर्स की स्पीड भी रखिएगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ क्लास, तो मैं फिजिकली आप नहीं देख पा रहा हूँ कि आप इसको कॉपी कर पाते हैं या नहीं. मेरे साथ साथ कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ चलें, ठीक है. और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे एडवाइस दी गई थी कि सर थोड़ा सा स्लो चलिएगा. चलिए कोशिश करता हूँ. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट सेज दैट एवरी composite number can be expressed in the form of product of its prime factors, product of its prime, which are unique regardless their order. Regardless their order. बहुत ही खतरनाक सी चीज लग रही है, लेकिन अभी तो सर ने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. ये क्या है? चलिए जो जो चीजें हमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल लग रही है, लेट्स अंडरलाइन दोस वर्ड्स. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज composite number, then the other number is prime number, then the other word which is used here is uniqueness, unique, and the next word is order. कोशिश करते हैं इन वर्ड्स की यहाँ पे क्या यूज है उसको. तो सबसे पहले तो हम एक बार रिकैपिटुलेट करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड. हमारी नॉलेज को एक बार अपडेट करते हैं, है ना. हमसे पहले बार कहा जा रहा है प्राइम नंबर्स. हाँ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? सबको आती है. वन और उस नंबर के अलावा जिसके कोई फैक्टर नहीं होते. सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो किसी और के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स होते हैं. जो किसी और के टेबल में नहीं आते, यानी वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स. लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. दीज आर प्राइम नंबर्स. ये ऐसे नंबर हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या इनको एक और फैक्टर है वन, बस इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है. जो दूसरों के टेबल में नहीं आते वो प्राइम है. तो जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाता हमें, है ना. चलिए कोशिश करते हैं. कंपोजिट क्या होते हैं? जो कंपोज करके भी होते हैं, मिलके बनते हैं, जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं. लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. दीज आर कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, जिनके वो नंबर भी वन, वो नंबर और उसके अलावा कोई और भी फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर है ना. सो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हम सबको पता है क्या होते हैं. फिर वो कह रहा है कि द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक ऑफ एनी कंपोजिट नंबर रिगार्डलेस देयर ऑर्डर. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एग्जांपल लेते हैं 30 का. 30 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it has 2 as its factor, it has 3 and 5 as its factor. So 30 can be expressed. He says every composite number. So let's take an example of composite number as 30. Can be expressed in the form of product of its prime factors. अपने prime factors के product के form में लिखा जा सकता है, जैसे 2 into 3 into 5, ठीक है. Which are unique
What is the uniqueness in it? Let's talk about that also. 30. It is divided by 6. 6 5 are 30. But 6 is not a prime number. And 6 is a composite number whose factors are 2 and 3 only. चलो किसी ने कहा नहीं यार 10 से डिवाइड कर देना, ये ले 10 3 are 30. Again we have an objection. How 10 is not a prime number? It is also a composite number. It is composed of 2 and 5. So got the point that the prime factors are unique. There is no other prime factor of 30 other than 2, 3 and 5. And of course regardless their order, वो हमने अभी example में देख लिया था. 13 can be written as 3 into 2 into 5. 30 cannot be written as 3 into 2 into 3 like this. Can't we write it? Yes, we can write it. So regardless their order, the prime factors are unique, but their order is meaningless here. Got my point? कि और ये 2 into 3 into 5 है ना, ये कैसे भी लिखा सकता है. हमें मालूम है मैथ्स है तो 3 into 5 को 5 into 3 भी लिखा जा सकता है. और इसी तरह से अपने पास में we can have different combinations of these numbers. No? So it says that fundamental theorem of arithmetic should be clear to us now. What it says? It says every composite number can be written in the form of product of its prime factors which are unique. The prime factors of a composite number are unique and the order is meaningless. Regardless their order. उसका order कोई मायने नहीं रखता. Got it? Simple वर्ड्स में यार prime factorization method है और क्या? Simple prime factorization method को fundamental theorem of arithmetic के नाम से मैथमेटिक्स में जाना जाता है. ठीक है? क्या यूज है इसका? HCF LCM में यूज होता है, हमें मालूम है ना? वही क्वेश्चन है. क्या सिंपल. चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. He says reduce, deduce or find something like that. Reduce 3025 into its prime factors. अब ये क्या है? बहुत सिंपल. 3025. Those of you who can do it verbal can do it verbal also, and those of you who are not so good at maths, they can do this thing also. Nobody is stopping you, right? चलो यहाँ पे देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं. 5 6 are 30, 5 5 are 25. क्या ये सही है? इसलिए एग्जाम्पल ये है बच्चों, ये कि 3025 है तो बीच में एक जीरो भी तो आएगा क्योंकि 2 और 5 दो डिजिट्स भी are taking it together, right? So it should be not 65, it should be 605. ऐसी बेवकूफियाँ 10th क्लास में मत कर दीजिएगा. चलिए 5 1 5 5 20 sorry 2 1 1 11 11 121. I hope I have done it correct. 5 1, yes, correct. So 3025 can be written as 5 into 5 into 11 into 11. This is what the prime factors of this number 3025, right? अगर इस find the HCF of 60 and 72 using prime factorization method. It says very simple. We used to do it like this some years ago. कुछ साल पहले अपन ये करते थे ना ऐसे 2 30 36 एंड ऑल, है ना? वही कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली लिखना है इसको. जैसे 60 के फैक्टर्स बना रहे हैं तो 2 30 2 15 3 5 एंड सो ऑन. सो हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट इट? 60 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. 72 इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, राइट? लिख लेंगे ना. ये प्राइम फैक्टर्स हो गए अपने पास में. HCF निकालना बेटा तो सबसे पहले ध्यान दें 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3. The HCF, highest common factor of 4 and 8. That means 2 square and 2 cube. The HCF is 4. Highest common factor 4 ले सकते हैं. यहाँ यूँ लिख लेता हूँ एक बार लिख ले 2 square. Simply again 3 and 3 square. The HCF of 3 and 3 square, that means 3 and 9. The HCF highest common factor क्या ले सकते हैं? 3. क्या 3x और 9y में 3 कॉमन आ सकता है? हमें मालूम है या नहीं? अच्छे तरह से मालूम है. You get 3. That means 3 is to the power 1. 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं. So what is the HCF of 5 and 1? It is 1 only, bro. So
The HCF of these two numbers is 4 into 3, that means 12. As simple as that, isn't it? HCF है 2 स्क्वायर और 2 का क्यूब, कौन सा लेना है? जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है, यानी 2 का स्क्वायर। 3 और 3 का स्क्वायर, कौन सा लेना है? जिसकी पावर कम है, यानी 3 की पावर 1। और 5 और 1 का HCF तो 1 ही होता है, तो हमारा HCF हो गया 12। एलसीएम की बात करते हैं। The LCM of 2 square and 2 cube, that means 4 और 8 का LCM 2 का क्यूब होता है, यानी कि इन दोनों में से जो पावर बड़ी होती है वो वाला नंबर लेते हैं। कैसे? 1/4 और 1/8। What is the LCM? Of course it is 8, isn't it? तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो 2 स्क्वायर और 2 क्यूब का LCM हो गया 2 क्यूब। 3 और 3 स्क्वायर का क्यूब LCM हो गया 3 स्क्वायर, यानी 3 और 9 का LCM 9 होता है। 5 और 1 का LCM 5 होता है ना? The LCM of, suppose a question like this, 2/1 plus 3/5. What is the LCM? The LCM is 5, right? वही फोर्थ फिफ्थ का मैथ्स है ना? करें जरा इसको, करते 8 into 9 into 5. The LCM is 360. Is something new in this? I don't think so. Isn't it very easy? Using fundamental theorem of arithmetic, find the HCF and LCM of two numbers we have taken out. Now, अगर इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए बोल दे तो अपने को ये तो करना है, the product of HCF and LCM, that means 12 into 360. The product of HCF and LCM is equals to the product of two numbers होता है। ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें लिखा होता है verify that this result. Of course, it can be very easily can be verified. The left hand side is equals to right hand side. The product of two numbers is equals to the product of HCF and LCM. Their HCF and LCM. और ये चीज अगर आपको वेरीफाई करने के लिए वो बोले कि verify the product of three numbers is not equals to the product of their HCF and LCM, तो वो भी कर सकते हैं अपन। कर सकते हैं ना बच्चों? जैसे वो कहे 12, 15 और 18 का HCF भी बता दो, LCM भी बता दो, और बताओ कि HCF into LCM, the product of HCF and LCM is not equals to 12 into 15 into 18. Can we do it? कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? 12 can be written as 2 square into 3. 15 can be written as 3 into 5. 18 can be written as 3 square into 2. Right? The HCF, talking about the HCF, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो, सब में कॉमन। 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 है ही नहीं, तो HCF होगा नहीं। 3, 3 and 3 square, so HCF is 3. Their HCF is 3. If you are talking about LCM, then 2 square is the highest power of 2. Then 3 and 3 square. 3 square is the highest number, and 5, of course. So this is the LCM. We can do the rest of the part. That product of HCF into LCM will not be equals to, again I am emphasizing on it, the HCF and product HCF of three numbers is not equals to product of three numbers. This is applicable for only two numbers. कर सकते हैं ना बेटो इसको आगे कंटिन्यू, right? So this is the multiplication part. I am leaving it for you. Again, the verification can be done. What is the use of this? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. Let a can be written as x cube into y, and b can be written as x square into y cube. And he says where x and y are prime numbers. Suppose, okay, a and b are composite number and they have been reduced into its prime factors like this. He says what is the HCF? मैं ये इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको क्लियर हो कि हम क्या लेते हैं HCF में। एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, HCF ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। याद के लिए ना बेटो, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, वो कह रहा है कॉमन ले लो। व्हाट इज कॉमन? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी कॉल इट कॉमन। सो व्हाट इज कॉमन इज हियर इट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, कहते हैं जूनियर क्लासेस में वही चीज है बेटा। सो व्हाट इज द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब? It is x square. What is the HCF of y and y cube? It is y only. If we will talk about LCM, then
x square and x cube. What is the LCM? The LCM is x cube, right? We have just seen 2 square or 2 का cube, 1/4 plus 1/8. What is the LCM? The LCM is 8. That means 2 का cube. वही है, right? Similarly, here y and y cube. What is the LCM? Y cube. Now we can see the product of these two numbers, x cube y into x square y cube. That means x raised to the power 5 into y raised to the power 4. I am applying simple laws of exponents. The product of these two numbers is x raised to the power 5 into y raised to the power 4. Is it equals to the product of their HCF and LCM? Let's try it on this side. X square and x cube, the product of these two is x5. Y and y cube, the product is y square. Y raised to the power 4, sorry. The product of HCF and LCM and the product of these two numbers is equal. This is what we want to say. The product of two numbers, not 3, not more than 3, nothing like that. Only two numbers. The product of two numbers is equals to product of their HCF and LCM. This is what he says, right? And we can prove, we can verify it also. What is the use of it? The use of it is that suppose two numbers are given to us, like he says, if the LCM of any number which is not known to us, right, and 75, या कुछ और लेते हैं, चलो 725 लेते हैं. The LCM of a unknown number and 725 is 2175, and the HCF of a, that means the unknown number, and 725 is suppose 145. Find the other number. Now let's talk about this question once again. He says the LCM of 725 and another number, or the LCM of two numbers is 2175, whereas the HCF of two numbers is 145. One of the number is 725, find the other. Simple, find the other. Chalo, a into 725. The product of these two numbers is equals to the product of their HCF and LCM. So 2175 into 145. The product of two numbers is equals to the product of their HCF and LCM. So A is 2175 into 145 divided by 725. I think 25 3 are, yes, 725 3 are 2175. So A is equals to 5 3 are 15, 5 1 13, 1 4 35. I suppose I have done the calculation correct. 3 5 are 15, 5 1, 3 4 are 12, 13 3, 1 4. So 435 is the other number. Again, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. अगर आपको दो नंबर में से एक नंबर मिसिंग है, आपके दो जो नंबर थे उनमें से एक नंबर मिसिंग है, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए था. तो हमने इस कंसेप्ट को यूज करते हुए जो अननोन नंबर था वो निकाल लिया, है ना, राइट? इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में. हालांकि HCF और LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब हमें उनके दोनों में अंतर पता चलता है, वरना लगभग लैंग्वेज तो सेम होती है. जैसे सपोज आपका फ्रेंड है कोई, उसने 3 अलार्म क्लॉक सेट करी हैं और वो तीनों के तीनों सुबह 5 बजे बजती हैं. एक हर 10 मिनट बाद बजती है, दूसरी हर 15 मिनट्स के बाद में रैंक होती है, एंड द अदर वन सपोज रैंक्स आफ्टर ईच 20 मिनट्स. द लीस्ट टाइम व्हेन अगेन दे विल रैंक टुगेदर. फाइंड द लीस्ट टाइम व्हेन दे विल रैंक टुगेदर, ऑल ऑफ देम. अगर तीनों की तीनों एक साथ बजेंगी तो कब बजेगी? अगर एक साथ 5 बजे बजेगी तो उसके बाद कब बजेंगी? कम से कम समय. नाउ हियर वी कैन easily check out, or we can
understand that what he wants is a LCM of these three numbers. Check करें जरा 2, 5, 15, 10. Then 5, 1, 3 and 2. So that LCM is 2 squared 3 into 5, 4 into 15. After 60 minutes they will ring together. After 60 minutes, that means at 6 a.m. again all of them will ring together. This is what the question says. No? So last and least, the last type of question you may find in the reference books is that how to find the HCF or LCM of numbers which are given in decimal form. And the last type of questions which you may find in the reference books is like find the LCM of decimal numbers like 0.25, 0.5 and so on, anything like that. Okay. Here you have to remember that how to find out the HCF and LCM is a simple concept like 25 upon 100, it should be 0.25 and 0.5 is 5 upon 10. While taking out the LCM, what we used to do is LCM of 0.25 and 0.5 will be LCM of numerators divided by HCF of denominators. This thing you have to remember. Okay, the LCM of numerator 5 and 25, the LCM is 25 and the HCF of the denominators, HCF of denominator 10 and 100, what is the HCF? The HCF is 10, so the answer is 2.5 like that. Okay, suppose इसी क्वेश्चन में उसने LCM की जगह हमसे अगर HCF पूछा होता तो क्या करते बेटा? समझ गया? बिल्कुल HCF of numerators को डिवाइड करते LCM of denominators से तो अपने पास HCF आ जाता है इनका, ये डेसिमल नंबर्स का, राइट? इसके अलावा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है या यूं कह लें दो अटपटे क्वेश्चन हैं, उनकी बात करते हैं सो दैट द टॉपिक इज ओवर कंप्लीटेड लाइक दैट. सो द क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी इज व्हाई और एक्सप्लेन व्हाई 4 raised to the power n can never end with the digit 0, where n is any natural number. N is any natural number like that. फिर से समझते हैं. 4 raised to the power n will never end with the digit 0, where n is any natural number. आगे होता समझ में समझाता हूँ. 4 की पावर 1, 4 raised to power 2, 4 raised to power 3, 4 raised to power 4 or anything like this, any number, any natural number, and we know that natural numbers are from 1, 2, 3 to infinity. Anything. He says it will never end with the digit 0. Let's try to understand why. 4 means 2 into 2 or 2 squared. 4 raised to power means 2 into 2 into 2 into 2. 4 cube means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 like that and so on. Fundamental theorem of arithmetic says the prime factors of 4 are unique. 5 is not a factor, prime factor of 4 नहीं ना, और 0 डिजिट तो तभी आएगा ना जब 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे. So according to fundamental theorem of arithmetic, 4 raised to the power n can never end with the digit 0 since the prime factors of 4 are not 2 and 5. It is only 2. It contains only 2. Like suppose somebody says, why 5 raised to the power n will never end with the digit 0. 5 की पावर कुछ भी कर लें कभी भी 0 नहीं आएगा end में. 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, जितना मर्जी कर लीजिए, 100 तक ले जाइए, जो मर्जी इच्छा हो. क्यों नहीं आएगा? अरे आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 5 की प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं होता. 2 is not a prime factor of 5, so it will never end with the digit 0. So what we will write in our answer sheets? We will write since according to fundamental theorem of arithmetic. I am writing FTA in short form, but this is not the short form of fundamental theorem of arithmetic. This is not the abbreviation used. Okay, so according to fundamental theorem of arithmetic, the
prime factors of any number are unique. Since 2 is not a factor of 5, hence 5 raised to the power n will never end with the digit 0. It will never end with the digit 0. Understood the meaning? अपन वैसे भी एग्जाम्पल से देखें ना बेटा, 10 की पावर 2, 40 की पावर 2 या 10, 20, 30, 40 इनकी पावर कुछ होगी तो लास्ट में डिजिट में 0 आएगा. क्यों? क्योंकि इनके सबके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों है, और 2 और 5 जिसके दोनों फैक्टर्स में होंगे उसी के पास 10 होगा. अब 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, उसके घर में या उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 तो आएगा नहीं, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक वो 0 नहीं आ सकता डिजिट, क्योंकि हमें 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है डिजिट प्लेस पे 0 लाने के लिए. दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इसका असाइनमेंट दूंगा वो आप खुद कर पाएंगे इस वीडियो के बाद. बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. तब तक एंजॉय कीजिए लॉकडाउन को और पढ़ने पे टाइम स्पेंड करिए.